you're able to listen to Swamiji and health. Am I right? So I'm also Rachna, and there's another Rachna. So she's suffering from leg muscular pain, okay, joint pain. तो बहुत तरह तरह की चीजें जो हो रही हैं, उसमें से कॉमन जो होता है वो है back pain, knee pain are the most common things that is seen in today's people. And believe me, not in the older generation, in the younger generation as well. तो कितने लोग उत्सुक है जानने के लिए कि हम लोग आखिर नेचुरल ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? How can we reverse our current condition? How many of us are ready to know that? कि हम अपने current pain, inflammation से freedom कैसे पा सकते हैं? So if you give me your permission, I would like to share the screen to enlighten you with how exactly you can change your life and change your condition. Do I have your permission? I can see a lot of hands raised. So we will be taking up the question and answer a little later. Abhi aap log sab dhyan se dekh le, and then lastly, Swamiji himself will be coming live to take up your questions. Okay. So do I have your permission? Yes or no? Foot drop, facial spasm, ये सब चीजों को हम लोग आज कवर करेंगे, right? सब जो न्यूरो रिलेटेड इश्यूज है, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज है, मसल वीकनेस है, all these will be covered today. So don't worry. Okay, so give me 2 minutes and I will share the screen. Anilji, can you see my screen? Yes, yes. Okay, Ashtaang Chikitsa online therapy for Neuro Musculoskeletal problems. जैसा कि कुछ लोगों ने बताया, किसी को पार्किंसंस है, किसी को साइटिका है, किसी को फुट ड्रॉप है. So it all circles around neuromusculoskeletal problems. So namaskar, I welcome you all to Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. तो कुछ जानने की उत्सुकता हो रही है, आखिर अवीसा हीलिंग करता क्या है? So in today's webinar, we will be presenting to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems. जिससे आप या आपसे जुड़े हुए कोई सगे संबंधी या दोस्त तड़प रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, in spite of spending a good amount of money on various kind of treatments. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer, जिसका आज के तारीख में एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है. Just a sec. Okay, so what exactly are we doing at Avisa Healing and Fitness? We are reviving Ashtaang Chikitsa. ये पुरानी चिकित्सा है जो आज मॉडर्न जमाने में आप लोगों को फिर से हम लोग इसको जागृत कर रहे हैं ताकि आपके प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं. To address the structural issues of a human being.
So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? ये webinar आखिर है किसके लिए? For people who are tired of temporary treatments and are looking for natural and permanent solution. Solution तो बहुत है आज की दुनिया में, but सब solution के साथ एक प्राइस पे करना पड़ता है आपको, वो है साइड इफेक्ट्स. बट ये जो नेचुरल और परमानेंट सोल्यूशन है, उसका साइड इफेक्ट जो है वो ये होगा कि आपके और काफी सारे चीज और प्रॉब्लम्स नोइंग एंड अननोइंगली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं. सो पीपल हु वांट टू टेक चार्ज ऑफ देयर हेल्थ in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. तो क्योंकि ये आपको आपके अंदर के ताकत को बढ़ाना है, काम तो आप ही को करना पड़ेगा. So you have to work hard on yourself to get out of your current condition. So reversing neuro musculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa. Freedom from pain and medicine. So balancing of body at 8 levels. आखिर ये 8 software है क्या? So I will just be giving you a brief. इसके बारे में आपको स्वामी राज विभूजी मेरे स्क्रीन शेयरिंग के बाद तुरंत आपको बताएंगे कि ये 8 लेवल आखिर है क्या. सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति और विकृति शरीर. तो होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग की बॉडी एज करती है, डीजेनरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस विच इज द विकृति शरीर. तो जैसे हम डाउन साइड में जाते हैं, डीजेनरेशन की तरफ जाते हैं, तो रीजेनरेशन फैक्टर अगर उतनी तेजी से नहीं बढ़ा तो इम्बैलेंसेस जो क्रिएट होता है बिटवीन द डीजेनरेशन एंड द रीजेनरेशन फैक्टर्स, तब आपको जो दिखाई देता है वो है आपका पेन, आपका इन्फ्लेमेशन, आपका स्टिफनेस. तो अगर हम ये प्रकृति और विकृति शरीर को बैलेंस करें, तभी आप अपने सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, यानी कि आपके दर्द और आपकी इन्फ्लेमेशन से बाहर निकल सकते हो. So Ashtang Chikitsa can heal a couple of diseases we have mentioned here. Yes, the list goes on and on, but ये कुछ common problems है जो आज के लोगों को feel होता है और देखा गया है. So knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issue, slip disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatic arthritis, osteoarthritis. तो degenerative disease and an autoimmune disease, हम दोनों ही चीज को हील करते हैं अष्टांग चिकित्सा में. Osteoporosis, where the bones start becoming brittle, and it's amazing to know आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं अष्टांग चिकित्सा में. Dislocation, neuropathy or nerve issues. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly Ashtang Chikitsa is all about और कैसे आप अपने current condition से बाहर निकल सकते हैं. Thank you for listening to me patiently. I'll just give you the sequence as to how we are going to proceed in our webinar. अभी आप स्वामी राज विभू जी को सुनेंगे जो आपको बताएंगे
कि अष्टांग चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं और कैसे आप अपने कंडीशन से बाहर निकलेंगे। उसके बाद वी विल बी शेयरिंग a life testimony, somebody who has been a part of the journey of Ashtang Chikitsa and her own experience from her own words. Then we will be sharing the program details. And last but not the least, as I already told you, Swami Raj Vibhuji will be coming live himself to answer all your questions. So in the meanwhile, I would request the participants, so please put your name, number, and the problem you're suffering from in the chat box, which we will be taking up in the webinar last when Swami Raj Vibhuji himself joins in live. Thank you so much for listening to me patiently. Namaste, sit back और आराम से वेबिनार को एंजॉय करें. ओवर टू अनिल जी टू शेयर स्क्रीन. थैंक यू. So let's start. Neuro musculoskeletal problem. We are talking about neuro musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज्ड देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. द डॉक्टर विल स्टिल से देयर इज अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम एट द नी. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? वाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. इफ योर लिवर गेट्स इंपैक्टेड देयर विल बी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. इफ योर डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर देयर विल बी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. थर्ड थिंग, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला.
So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज एन इशू विथ डाइजेशन. नाउ रचना जी सेड after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes, what does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? हार्मोन इंबैलेंस, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इंबैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. सो व्हाट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स? देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है. नाउ इफ द ऑस्टियोपोरोसिस हैज हैपेंड, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. इफ दे हैव बिकम ब्रिटल by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurved kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. एंड जस्ट अ लिटिल बिट इफ यू नो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट. ये अलग नहीं. सो योर बॉडी and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्मेशन. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And they
there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti, and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? इट वांट्स टू इनहेल लेस एंड एक्सहेल मोर. सो इज कंस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर और डिस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर? लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन. सो आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid,
The kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the five senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती disalign हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें disalign हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem,
ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, Pramana Sharira, Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana. चौथे पे आ गए हम. Pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapt Dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs है, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs है ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack.
40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ. यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. करके देखिए दोबारा. अगेन डू इट अगेन. सी, पुश इट हार्ड. यू होल्ड योर ब्रेथ. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन. दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इनसाइड, दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. दिस इज द ओनली वे. देयर इज नो अदर वे. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. एंड देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction, muscle and bone junction, two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन, आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा.
if this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना वेस्ट छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे खटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना मूवमेंट के नहीं होगा. ब्लड सर्कुलेशन कैन हैपन विदाउट मूवमेंट बिकॉज देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो इफ यू मूव द बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे, दीज टॉक्सिन्स दे गो आउट ऑफ द बॉडी. देयर इज अ कांस्टेंट रिजुवेनेशन ऑफ सेल्स. इंटरनल एनवायरनमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देयर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरनमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवेनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में there is a part in Ashtang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो फंक्शन, देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी: मटेरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मींस थ्री थिंग्स: मटेरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? Vata dosha. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is Vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement.
कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way
of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now being busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें
stress होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Kiran ma'am to share her experience of Ashtaang Chikitsa. Kiran ma'am, are you able to hear me? Kiran ma'am, are you there? Okay, in the meanwhile, yes, Kiran ma'am, you can unmute yourself, please.
Hello. Yes. Yes. Are you able to hear me? Yes, I'm able to hear. Yeah. Tell me. Yes, Kiran sir, you can, I'll just put you on spotlight and then you can, so that everybody can see you. Okay. Just a sec, I can't trace you. Have you joined by the name of Kiran? Yes, my name is Kiran Kumar. Just a sec. Yes. Yes, sir. Okay, tell me. This is first class I'm attending actually. Kiran sir, okay, we were talking about somebody who was a participant of Ashtaang Chikitsa. Okay. Okay, I'm so sorry. So, Durga ma'am, are you there? Durga Panda. Yes, sir. Sir, you need to unmute yourself, please. Unmuted. Is it mute only? Yes. So, Durga sir will be sharing his journey, how within a month he got relief from pain. Over to Durga sir. Good evening to all. I am Durga Panda, 64 years old. I was suffering from all types of disease like prostate operation, back pain, knee pain, then having a UTI, urinary tract infection. It was so serious that even catheter could not be inserted by the doctor to evacuate my urine. I was in a very dying state. There is no passing of stool and no passing of urine. Okay, what happened? After joining this program, I started having some problem when I took this ghee. It was also not accommodating me. I was getting this all types of acidity, and I was feeling I may not succeed. But the second day and the third day onwards, I felt better. After doing all the kriyas, now I am feeling a very enjoyable my life. I can go in stairs. Actually, I was having knee pain and always I was using knee cap. Doctor told me not to climb the staircase, but now I can do it easily. So I feel very much delighted by joining this program. My main focus was in anal muscle pumping, where my urine was not coming. After doing this anal muscle pumping, urine could flow. And now in night, when I was getting up 3-4 times, now I did not get up. I sleep at 10 o'clock and get up and woke up at 5 o'clock. That is the miracle happened to me. All these things, Swamiji is a God to me, who gave me all the motivation. And now you might have seen me in my picture previously. Now I am so jolly and happy. I will continue myself till I die. I will have this kumbhak in my life. Thank you so much, Durga sir, and the tremendous effect that it has happened on your body. It is very evident on your face, the light and the glow on your face. Thank you so much. Please continue the practices. Without delay, I would like to ask Anil ji to please share the program details. And after that, we will be taking up the question and answer as Swamiji joins in. Over to Anil ji. All right, just give me 2 seconds and I'll share my screen. Sure, sure.
Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. All right. Okay, so let's get to know the program details, as a lot of you may be waiting for it. We'll just go through the slides very fast, and we'll share the details in the WhatsApp group as well as in chat also. So nothing to worry about. It's a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. It's a supervised program. You do all the kriyas, all the kriyas will be done under supervision only. Like Swamiji already told in the webinar, in the video, that there are 3 modules: module 1, module 2, module 3, or you can call them Vata module, Pitta module, or Kapha module. And each module is of 21 days or 3 weeks duration. Again, the program is of 9 weeks plus 1 week, so total 10 weeks. 1 week is for customization, and what exactly is customization we'll get to know in a short while. There will be 2 live classes every week. One will be the learning class or the main class, and one will be the mentoring class or the practice class. And all the classes are recorded, so you'll get access to all the videos and written instructions. So you don't have to worry even if you miss any class. What are the next steps? You pay the program fee, and we have a very special webinar pricing for people who are attending the webinar right now. Then you fill the participant onboarding form so that we can create the login credentials for course access, in which you'll be finding the recordings. And then you start your classes, starting with module 1 or the Vata module, then module 2, and ultimately module 3 also. Total classes, again, module 1 will have 6 classes, 3 learning classes, and 3 mentoring classes. Same is for module 2 and module 3 also. So total 18 classes plus 1 class would be a customization class plus 2 Q&A sessions live with Swami. So the total engagement is for 10 weeks. Class start dates for the 80th batch. This is the 81st batch that will be starting, and which is starting on 23rd May. Module 2 will start on 14th, then on 6th July, module 3 will start. For module 1, mentor classes are on Thursdays. For module 2, mentor classes will be on Fridays. For module 3, mentor classes will be on Saturdays. What is the class experience like? These are live sessions, as you already must have known by now. And mentors watch all the participants doing live kriyas. See, a lot of you may have the question, and we've been getting this question from previous participants also, that how is it possible on Zoom? How is it possible on online? See, we've got more than 1,000 participants now, the present ones and the previous ones, and everybody was taught online only. See, because we are so used to face-to-face interactions, that when we talk about a live session, especially when a therapy is concerned, we have some doubts, but be assured, we've perfected this online therapy, so we know how to conduct all these therapies. And just like Durga sir shared his experience, so a lot of people will be sharing their experiences as we go on with the program. So nothing to worry about. We know how to conduct these sessions. We are experts at this. We have to conduct the sessions online. You don't have to go to any place. You just be at home and just follow the instructions. Then written instructions are provided to you, and the session recordings are there. I already told you that all the classes are recording, so you'll be getting access to all those recordings also. There'll be a lot of extra things you'll be getting. There'll be mental practices. There'll be unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan, or you won't be given any diet plans as such, but the main thing, the basics of food, how to use food to support your body so that it does not harm you. And then there are simple detox processes, and there are a lot of knowledge that Swamiji shares with all of us. Before I come to the fee, I've written some numbers here. This is the yearly expenses that many of us could be, spending on just to manage the problem or the disease that we are into. The doctor fee you could be paying between 6,000 to 12,000. Physiotherapy, if you're into physiotherapy, 12,000 to 30,000 you could be paying on a yearly basis, and then medicines another 15,000 to 30,000.
total 33,000 to 72,000 you may already be spending on just to manage your disease. And we all know the side effects of allopathic treatment, so we won't talk about that much. Why this is important? So that we know how much we are spending and how much the Ashtaang Chikitsa therapy will be costing you, or should I say how much you'll be investing in your therapy, because this is a permanent solution that you'll be getting into. All right, before I share the program details, it's very important to know who this program is not for, so that it's clearly understood who this program is for. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. For so many years, maybe 5, 10, 15, 20, 30, 40, maybe 40 years, you could be using a allopathic treatment, wherein we've got so used to allopathy that as soon as a small problem comes, we just pop a pill and it just has an immediate effect. The side effects we already know, but that's the mentality that we've got into. We want things fast. We want things to happen fast. Okay, so this is not for people who are expecting something like that. And this is not for those who are not ready to work on their body. You've tried so many things. You've been already taking so many treatments. But until and unless you take charge of your health in your own hands, things won't improve. You must have already realized this by now. And it's not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. I'd like to just stop here and just talk about it a bit more. Many people who I talked to regarding taking up Ashtaang Chikitsa, they say that we are so busy that we can't invest 60 to 70 minutes every day. So this is not for those people who don't have this kind of time. And see, it's not even a matter of time, it's a matter of priority. If health is your topmost priority, if a permanent solution is your topmost priority, you'll find time. If it's not a priority, you won't even find 1 minute. So just wanted to impress this upon you. And this is not for those who are impatient, obviously, because this is not something which will, give you results tomorrow. But for some people, it does give, but those are very few. But for many of you, if you're not prepared to, have patience, this is not for you. And it's not for those who are looking for a free treatment, also just some tips. The people who attend the webinars, most of the people are there to just pick up some tips. They'll attend one webinar here, another webinar someplace else, and they'll just try to pick up tips. See, one therapy could be working this way. If you just keep on picking up tips, it won't work. It's a therapy, so a holistic view needs to be taken into account. And since a diagnosis is involved in this, so I just wanted to talk about this. I hope you get the point. What all you get in the therapy? What all you get in the program? Prana Shakti diagnosis for root cause determination. See, just this diagnosis in itself could be worth the total cost of the program, because not many treatments are there who try to find the root cause. What got you into the problem in the first place? This is a unique diagnosis and the only diagnosis of its kind. So once the root cause is known, once we can find out the root cause, a solution is possible. Otherwise, we'll be just making guesses and experimenting. That's all. There'll be weekly one main class of 60 to 90 minutes. Then weekly one practice class of 60 to 90 minutes. Online course access for 1 year. Like I already told you, the classes are recorded and made available to all the participants through a login ID and password. And this access to the recordings will remain with you for complete 1 year. So you don't have to worry about if you forgot something, if you don't remember anything, the recordings will be with you. And videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? In the class recording, it is the full 60 to 90 minutes of the class. But this point, videos of all kriyas, but let's say there are kriyas which takes 2 minutes, 5 minutes. So separate videos of all kriyas are there, because you may not want to watch the whole 90 minutes video to just find that 2 minute or 5 minute kriya clip or video. So the kriyas videos are provided to you separately also.
Written instructions. As soon as you log into your dashboard, the course dashboard, you'll be able to see the written instruction, which you can download and take a printout also and learn from that on a daily basis. Because see, different people have different ways ways to learn. Some like to learn through a video, some like to learn through a written instruction. So as per your convenience, as per your likeness, you can follow the written instruction or the videos. Private WhatsApp group to ask doubts, questions. See, this is the main place where all the action will happen in terms of for the 10 weeks at least. This will be a home for the next 10 weeks because everything related to the program, to the kriyas will be taking place inside this WhatsApp group. Our mentors are added to the group. So they'll be answering your doubts, your questions, everything. And the meeting links will be posted here. So this is the place which will be most active for first 10 weeks. Individual participant progress tracking or feedback. You'll be getting a form to daily fill up what went well, how you're feeling, any problem you're facing. So your progress will be tracked on a daily basis. Therapy customization for each participant in the 10th week. The first point you remember, this is the Prana Shakti diagnosis to find the root cause. Based on that Prana Shakti diagnosis, based on the root cause that was found, the therapy of each participant will be customized. The kriyas will be fine-tuned and customized as per your root cause. Because everybody has a different problem. Like in the video, in the webinar, Swami said that there are 84 forces. And which force has become weak, that is found through the Prana Shakti diagnosis. And once that root cause or the weak force has been found, therapy will be customized as per that root cause, so that the recovery happens very fast since you'll be addressing the root cause directly. Old students group, we keep in touch even after the program is over. What does that mean? After the 10 weeks, you'll be shifted to an old students group, which means you'll still be able to get connected with us. You'll still be able to ask questions, your doubts and everything. And this is the only program which offers support to its participants even after the program is over. And there's nothing that is charged for this extra support. Because we know this is an online session. We know people are in pain. So some people may miss some classes due to their, maybe they're experiencing a lot of pain and everything, may miss class. So that's the reason we keep the participants with us throughout. Until unless you don't want to stay with us, but we keep our participants with us. We know that you're in pain, we know you're in problems. So after the program is over, you'll still be able to ask us your questions and your doubts. So this is, I hope you'll appreciate this thing. All these points I've already talked about them. Program fee for Ashtaang Chikitsa 9,500 only for the complete diagnosis, root cause determination, for customization, 21 classes. But wait, as I already promised you, that there's a special webinar pricing. So for people who stayed back, who haven't left yet, there's a special pricing that you won't be able to believe. What is that? Just 5,500 for the complete program. 21 classes, therapy customization, Prana Shakti diagnosis, lifetime support, and this is a 10 weeks program. If we divide that by 21 classes, the fee that you invest in is just 262 rupees per class, plus all the 10 benefits that I talked about. So we made it so affordable that everyone can, pay and invest and get on the journey to get cured and get a permanent solution. How to enroll? You pay the program fee, then you post the payment receipt in the WhatsApp group that you're a part of. Then you fill the participant onboarding form, the link of which will be sent to your personal chat on WhatsApp. Then you join the first module and start attending classes to learn Ashtaang Chikitsa. Payment methods will be sharing in the WhatsApp group and in the chat also. I'd like to stop here for a while and talk about the super team that we have. Why? See, howsoever good this program may be, this is a wonderful program, and in which people are getting benefited, they're getting solutions. Like Durga sir talked about his experiences. This is the team, the magical team that we have, because these will be the people who will be supporting you on a daily basis.
This team will make sure that the program's worth or that you get benefited through this program. We have Rachna Shrimal Botra, she is the host of this webinar and she is the program director. Shalini Bhagwat, she takes care of all the batches and classes and all the meeting links and all the class links. She is the person that takes care of all these. Atul Sharma, one of our senior mentors. Pooja Chopra, another mentor. Ranjana Swen, another mentor. Rakhi Chabra, another mentor. Neha Upadhyay, she is in charge of the enrollment. She'll be the person who will be talking about the enrollment, sending payment links and everything. So before you enroll, she'll be the person you'll be talking to with. And then Anil Chauhan, that's me. After the webinar, you may ask your questions in the WhatsApp group because we may not be able to take all the questions right now due to shortage of time. So Swamiji will try to answer as many questions as possible. But if your question is not answered, nothing to worry about. You just post your question in the webinar group that you're a part of, and I'll be answering all those questions for you. I'll be awake till 11 p.m. today, so don't worry. Himanshu Reddy, he's the person who takes care of all the technical things like the login ID, password, videos. If your written instructions are not downloading, if your video is not playing, he's the person who will be helping you. So what I want to impress upon you is that we have a proper team so that this program is a success for you, individually for everyone. And like I already told you, we have a lifetime support, so nothing to worry about. If you miss any class, if you don't understand anything, you are with us for life. And with this, I come to the end of my part. I'll hand over back to Rachna ji. Please. Thank you so much, Anil ji, for sharing the program details. Now, actually, Kiran ma'am is not able to unmute, so I would just give her one more try so that Kiran Makar ma'am, No, can you hear me? She's not there. Okay, so joined. okay, so I'll just, without delaying, we'll take up the question answer. Swamiji has joined us. Namaste, Swamiji. Good evening. So one by one, we will be taking the questions. Just a sec. Okay. Shanti ma'am says, my son is suffering from knee pain. He is 26 years. 26 years and knee pain. Yes. What have we done to the world? Dunya ka kya hal bana? Similar question from Sadhna ma'am, also suffering from leg and knee pain from 8 years. So maybe we can answer these two questions together. So see, these problems can be seen from various perspectives. One of the thing, आपको एक simple terms में बताया. See, Ayurveda is getting pushed, so you must have heard certain words. Vata, Pitta, Kapha. So knee pain, the downward part of your body, is Vata dosha. Vata dosha also means that functioning of any organ in your body or any kind of function is becoming weak. आपके शरीर के कार्यकलाप, अंदर के जो ऑर्गन हैं उनके कार्यकलाप वो धीमे पड़ते हैं, वो प्रॉपर नहीं हो रहे. Another thing is there is a vayu in your body called as nada vayu. Now if you just have knee pain, केवल knee pain है, बाकी कुछ नहीं है, so that means the naga vayu or unidirectional movement in your body has got disturbed. In female, it might happen due to hormonal imbalance. Again, in males also, some kind of a hormonal issue. Or unidirectional movement. That means, एक direction में जो चीज जाती है, food आप ऊपर से खाते हैं, नीचे जाता है. So ये ठीक से जाना चाहिए. It has to go properly, and there are 16 स्रोत, 16 स्रोत हैं आपके बॉडी में, उसमें सब में एक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए. वो नहीं होगा, so that means knee is also something, or legs, lower part of leg is also something which takes care of the whole burden of your body. आपके शरीर के पूरे बर्डन को वो उठाता है. तो स्रोत अगर खराब हो गए तो आप बर्डन नहीं ले पाएंगे. Now it is also an indicative. It is 26 years. 26 years तो अभी जवान हुआ.
So it is also an indicative of something more coming in the life. कुछ और गड़बड़ी आ सकती, यानी आपके शरीर ने आपको गए मूवमेंट को थोड़ा रोक रहे हैं, यानी आगे चल के कोई और प्रॉब्लम भी आ सकते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट, सी वॉट एवर प्रॉब्लम, अगर आप कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इट इज नेवर लोकलाइज. ये कभी भी लोकलाइज नहीं होता. आपका लिवर आपके हार्ट के बगैर काम नहीं करता, आपका किडनी आपके लिवर के बगैर काम नहीं करता, आपकी न्यूरो मसल और स्केलेटन जो है ये सारे बाकी के फंक्शनिंग के साथ में जुड़ा हुआ है. अगर आप लोकलाइज ट्रीटमेंट चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहते हैं, तो उस समय आप कोई दवाई लेके मैनेज कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो और खराब हो जाएगी स्थिति. आप आंखें खोल के देखना पड़ेगा, क्या मैनेज करके आपको सोल्यूशन मिला, आपकी लाइफ अच्छी हुई? नहीं होती. सो लोकलाइज देखना छोड़ दें. नी प्रॉब्लम को केवल नी प्रॉब्लम नहीं देखें, नहीं तो डॉक्टर क्या कहेंगे, घुटने बदलवा दो जी, यही कहेंगे ना. तो बट वो तो सोल्यूशन नहीं है. इट कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली, बहुत आसानी से ये हैंडल हो जाता है. नागवायु आपका ठीक करेंगे, हम स्पेशलाइज आपको प्रैक्टिसेस देते हैं, तो आपको पहले डायग्नोसिस करके कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हुआ, हम आपको स्पेशलाइज प्रैक्टिस देंगे. आपका जो प्रैक्टिस आपको सिखाएंगे, जो कुंभक आपको सिखा रहे हैं, 3 चीजें हम सिखाएंगे आप, अंगन्यास, हठविन्यास, कुंभक थेरेपी. इन तीनों को ही कस्टमाइज किया जाएगा आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, एंड वी विल आल्सो सजेस्ट यू सम सपोर्टिव थिंग्स. सो इफ यू करेक्ट योर बॉडी, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, आपके शरीर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीक फैक्टर के कारण वो पैदा हुआ. सोल्यूशन तो वही है कि उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए. बाकी सब मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट इमीडिएटली किया जा सकता है, बट वो ट्रीटमेंट नहीं है. तो बहुत जरूरी है और बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, Nandita ma'am talks about facial spasm. हाँ, facial spasm. Now facial spasm, and let's talk about neurodegeneration. So नसें हैं ना आपके शरीर में, they actually help you to take control of your body. आपके शरीर को कंट्रोल करने में मदद करता है. See, हड्डियां अपने आप में आपके शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकती, मसल्स अपने आप में आपके शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जो भी कंट्रोल है वो बेसिकली आपके नसों के जरिए यानी नर्व्स के जरिए रेगुलेट होता है, कंट्रोल किया जाता है. अब आपके शरीर में अगर सपोज कीजिए हर एक एस्पेक्ट बार बार उसमें नए नए सेल्स पैदा होते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते हैं, हर जगह होता है. नर्व्स का भी ऐसा ही हाल है, उसको भी रीजेनरेशन चाहिए, दोबारा पैदा होना चाहिए. अष्टांग, जब हम ये अष्टांग चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग चिकित्सा इज प्रकृति शरीर, तो एम्पावर प्रकृति शरीर. प्रकृति शरीर का मतलब रीजेनरेशन, दोबारा पैदा होना. और दोबारा पैदा होने के लिए, टू रीजेनरेट एनीथिंग, योर बॉडी शुड हैव सफिशिएंट कैपेसिटी. 6 बल होना चाहिए उसके अंदर, तब जाके वो रीजनरेशन करेगा. सो प्रॉब्लम लाइक फेशियल पैल्सी, माइस्थीनिया ग्रेविस. माइस्थीनिया ग्रेविस भी एक चीज है जिसमें आपके कुछ एरियाज बॉडी के ना, जैसे खास करके चीक्स आपके कंट्रोल में नहीं होते. अमिताभ बच्चन को भी है. हमारे यहाँ माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो जाता है. पैरालिसिस, क्या पैरालिसिस रिकवर हो जाता है? 95% से ज्यादा सेंसेशन वापस आ जाते हैं. हम आपको टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, मगर एक बात बताइए, ये भी टेस्टिमोनियल अनलेस अनटिल यू वर्क अपॉन योरसेल्फ, टेस्टिमोनियल काम नहीं करेगा. ड्रॉप फुट, अगेन अ न्यूरो डीजेनरेशन इशू, ड्रॉप फुट हो जाता है. ठीक है. सो देयर आर मेनी इश्यूज व्हिच इज रिलेटेड टू न्यूरो डीजेनरेशन. इफ इट पेन समवेयर, अभी क्या कर रहे हैं फेशियल पैल्सी के लिए, वहां पे कंट्रोल नहीं, माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए क्या करते हैं, वो जहर डालते हैं, बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा देते, जिससे आप वो वहां की नसों को ना ऑलमोस्ट डेड बना देते हो, क्योंकि वो फड़कती हैं, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो उनको डेड बना दिया. तो इज दैट अ सोल्यूशन? मार देना कोई सोल्यूशन तो नहीं है. गेटिंग योर नर्वस सिस्टम गेटिंग रीजेनरेटेड, देन यू हैव कंट्रोल ओवर इट, ये सोल्यूशन है.
ऐसे लोग हैं जिनके जॉज कंट्रोल में नहीं आते, टाइट हो रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई रोज इंजेक्शन लेना पड़ेगा, एंड दे कम टू आवर प्रोग्राम एंड दे गेट रिलीफ, उनको रोज इंजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो रीजनरेशन फैक्टर कैसे बढ़ाएंगे? दवाई आपका रीजनरेशन करा सकती है क्या? कोई दवाई रीजनरेशन नहीं कराती, कोई दवाई नहीं कराती। अच्छा, फूड क्या हेल्प कर सकता है आपको रीजनरेशन में? अरे आपका शरीर उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सो यू हैव लॉस्ट सर्टेन स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, इट नीड्स टू बी रिकवर्ड, उसको रिकवर करना जरूरी है, वही ट्रीटमेंट है और कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई से योर बॉडी इज मैजिक, द प्रॉब्लम इज वी आर डिस्ट्रॉइंग इट। बचपन से कितना मेडिसिन खाया आपने? आप सोचते हैं पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट है, नहीं नहीं, अपने घर में देखो, यू आर ए ड्रग एडिक्ट, आप ड्रग एडिक्ट हो। जब जमीन पे हमने खाद डाला, जमीन की फर्टिलिटी खराब हो गई, आप कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती करो, आपने अपनी बॉडी को कितना खराब किया, कितना केमिकल बाउंड डाला, तो आपने वीक कर दिया अपने बॉडी को, इसके षडबल वीक कर दिए, इसके अष्टांग कमजोर कर दिए, इसके 16 स्त्रोत आपने वीक कर दिया। नाउ रीजनरेशन तो नहीं होगा। सो इफ वी एम्पावर इट, रीजनरेशन इज पॉसिबल 100%, बिकॉज नोबडी कैन क्योर योर बॉडी बट योर बॉडी। आपके शरीर को कोई और ठीक नहीं कर सकता आपके शरीर के अलावा। तो अपने शरीर को वो सपोर्ट दीजिए और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो आप दवाइयों के जो साइड इफेक्ट है उससे भी कैसे बचेंगे? इफ योर बॉडी इज एबल। अच्छा बताइए, फूड भी जो है वो भी फायदा कब करेगा आपको? व्हेन योर बॉडी इज एबल। आपका शरीर काबिल है तो वो फूड को डाइजेस्ट करके न्यूरो रिजेनरेशन कर देगा। एंड वी हैव प्रूव्ड इट, हमने प्रूव किया कि न्यूरो रिजेनरेशन होता है। तो ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी। इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, न्यूरो रिजेनरेशन होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पर मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों को 6 में, बट अगर आपको वो 1 साल में भी ठीक होता है तो इज इट अ बैड डील? कोई और तो चारा है नहीं, देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, और हो भी नहीं सकता। योर बॉडी कैन ओनली क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Devika ma'am writes about hand finger bending automatically. हैंड फिंगर बेंडिंग ऑटोमेटिकली, अगेन वंस अगेन वापस आ जाइए, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर हैंड्स एंड फिंगर्स। वापस से आ जाते हैं, कहां पे प्रॉब्लम, कहां पे है? नर्वस सिस्टम हैज गॉन वीक, जिसे हम नस नाड़ी कहते हैं, वो कमजोर हो। नाउ रीजनरेटिंग दैट और गेटिंग कंट्रोल। अब मुझे एक बात बताइए, आप अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूं, आप कीजिए। स्टैंड ऑन वन लेग, एक पांव पे खड़े हो जाए, ट्राई टू बैलेंस। व्हाट डू यू डू टू बैलेंस योरसेल्फ? क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए? करके देखिएगा। यू होल्ड योर ब्रेथ, आप सांस रोकते हैं, बिना सांस रोके आप बैलेंस नहीं कर सकते। यू कांट क्रिएट बैलेंस विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ। यू हैव टू लिफ्ट अ वेट, कोई वेट उठाना है, हाउ डू यू लिफ्ट वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड, सांस रोक के आप वो शक्ति पैदा करते हैं। आपको अगर पुश करना है, ये जोर लगाना है, तो हाउ डू यू पुश? व्हाट डू? यू होल्ड योर ब्रेथ बिहाइंड, पीछे आपको सांस रोकनी पड़ती है। आपको खींचना है, व्हाट डू? यू होल्ड योर ब्रेथ बिहाइंड। यू हैव टू जंप करना है, व्हाट डू? यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ टू जंप। So you have to dance. What do? How do you regulate your body? By variable breath hold behind. ठीक है? कुंभक का एक पक्ष, one of the vertical of कुंभक is breath hold. So what have you lost? अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या खो दिया आपने? ब्रेथ पे कंट्रोल खो दिया। ब्रेथ होल्ड एक्चुअली आपका ज्यादा नहीं है। So the more you increase the breath hold, you'll see, you'll start getting in control. आपके लिम्स कंट्रोल में आने लग जाएंगे। दैट इज वन एस्पेक्ट, एक तरीके से देख सकते। दूसरा तरीके से होगा क्या उससे? न्यूरो रीजनरेशन। फिर और क्या हो सकता है? इफ यू आर ओल्ड एंड यू आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपर्ली,
we will also suggest you certain external support initially. बाहर से कुछ सपोर्ट आपको हम बताएंगे, पर क्या वो ट्रीटमेंट है? वो ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ सपोर्ट. कहीं पे दर्द हो रहा है, अकड़ आ रही है, तो वी हैव सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच इज लाइक लगाते ही वो चीज ठीक हो जाएगी, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है. इट इज जस्ट अ सपोर्ट दैट यू so that you work upon the body, do kumbhak, do anganyasa, do hatha vinyasa, and then you come out of your problem. तो ये न्यूरो रिजेनरेशन कैसे होता है? कुंभक से होता है, और कोई चारा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dr. Sunita writes about AV and right hip. AV is what? AVN. What is AVN? AVN आप जरा टाइप करके देखो, what is AVN, या वो बताएं AVN है क्या? Dr. Sunita, you can please unmute yourself and. नेक्रोसिस है अगर, if it is necrosis, then necrosis का मतलब होता है सेल्स डेड हो रहे हैं, टिश्यू डेड हो रहे हैं, स्पेशली मसल सेल कहीं पे डेड हो रहे हैं. सो कई केसेस में से स्टेनोसिस भी कहते हैं, हार्ड हो गए, डेड हो गए, और द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ योर मसल फाइबर becomes less, so it becomes hard, stiff and non-flexible. दूसरा, then it is dying, that is necrosis. So wherever there is necrosis, कहीं पर भी necrosis है, it means the cells are dying and new cells are not formed. necrosis के बारे में आप कहते हैं कि सेल्स मर रहे हैं और नए सेल्स नहीं पैदा हो रहे. ठीक है, बोन का necrosis, ओके. सो बोन नेक्रोसिस क्यों होगा, कैसे होगा? डायरेक्ट आंसर अगर मैं कहूं टेक्निकल टर्म्स में, सो देयर आर सर्टेन चैनल्स थ्रू विच योर बोन गेट्स क्रिएटेड. इसमें रीजेनरेशन होता है. इसको अस्थिवाह स्रोत कहते हैं. अस्थिवाह स्रोत, those things which are required to form your bone, formation of bone, the channels are not working properly. So what is the solution? अगर bone necrosis हो रहा है तो what is the solution in allopathy? No solution. कोई दवाई नहीं हो सकती इसके लिए. मगर इसका मतलब आप ठीक नहीं हो सकते? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. Another example, ऑस्टियोपोरोसिस. इसके साथ में मैं डाल रहा हूं सो दैट पीपल अंडरस्टैंड. कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है. सो कैल्शियम की कमी, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड. ऑस्टियोपोरोसिस मींस लैक ऑफ कैल्शियम. नो, इट इज नॉट लैक ऑफ कैल्शियम. योर बॉडी इज नॉट बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब कैल्शियम. आप कैल्शियम खाते रहो, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होगा? किसी का ठीक नहीं होता. So if your body is not able to absorb calcium, whatever you provide, it will not absorb. कितना ही कैल्शियम खा लो, ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे. कैल्शियम ज्यादा खाओगे तो ब्रेस्ट कैंसर के 200% चांस बढ़ जाएंगे. बट इट डजंट हेल्प योर ऑस्टियोपोरोसिस. तो टेक्निकल टर्म्स में, लॉजिकली भी आप अपने दिमाग से सोचो. बोन्स को फॉर्म होने के लिए दो चीज चाहिए, some kind of nutrition and the conversion force, शक्ति जो कि उस न्यूट्रिशन को बोन में कन्वर्ट करे. सो अस्थिवाह स्रोत, जहां से बोन का न्यूट्रिशन जाता है, वो है नहीं, प्रॉपर खुला नहीं है. दूसरा, आपके शरीर में वो बात नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो कि उसको वो बोन में कन्वर्ट करे. दो चीज बताया. अपना किचन का सिंक अगर ब्लॉक हो जाता है तो आप करते क्या? व्हाट डू यू डू? थोड़ा जोर लगाते हो, थोड़ा जोर लगाते हो. कफ गले में फंस रहा है तो क्या करते हो? जोर लगाते हैं आप, थोड़ी खांसते हैं, उसके पहले सांस रोक के थोड़ा जोर लगाते हैं. खांसी क्या है? इट इज ब्रेथ होल्ड एंड देन फोर्सिंग समथिंग आउट. जब किचन के सिंक में आप जोर लगाते हो तो आप भी सांस रोक.
अब सांस रोक के अगर अंदर आप जोर लगाओगे तो आपके स्रोत खुल जाएंगे. If it is directed towards a certain point in a particular way. For example, लिवर पे इंपैक्ट कैसे होगा? आप 1 यूनिट इनहेलेशन करते हो, सपोज 1 यूनिट 3 सेकंड है, 3 सेकंड का इनहेलेशन क्या? 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, सेकंड स्टेप में 1 यूनिट होल्ड किया, रोका, 4 यूनिट, तीसरे स्टेप में क्या 4 यूनिट एक्सेल करते हो तो आपके लिवर पे असर आता है, यानी आपका लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है. सपोज यू इनहेल 4 यूनिट, होल्ड 2 यूनिट, एक्सेल 1 यूनिट, होल्ड 1 यूनिट, देन इट इंपैक्ट्स योर किडनी. आपका किडनी ठीक होना शुरू होता है ना. ये मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बताया, ये बहुत बड़ा साइंस है. तो अगर अस्थिवाह स्रोत पे अगर हम काम करें तो आपका पहली बात क्या होगा, ये जो सेल्स डाई तो होते ही है. नेक्रोसिस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हम वहां पे देख रहे हैं कि मरे हुए सेल्स हैं, पर मरते तो वो हैं ही, नए नहीं पैदा हो रहे. So if we start regenerating the bone tissue, you'll see people experience this. They do kumbhak after a certain period of time. They see, अरे मेरे मोटे तो नहीं हुए मगर वेट ज्यादा हो गया. तो ये वेट आया कहां? आपके बोन में आया वेट. नए सेल्स पैदा हुए. नेक्रोसिस तो मर तो रही है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अरे मरे हुए सेल्स दिख रहे हैं, टिश्यूज दिख रहे हैं, तो आप कहते हो नेक्रोसिस हो गया. अरे बाबा पैदा नहीं हो रहे, प्रॉब्लम इज देयर. तो वहां अगर हम कोई तरीका है, कोई दवाई आपके सेल्स पैदा करवा नहीं करवा, मारती जरूर है. ये मेडिसिन के कारण भी नेक्रोसिस होता है. द मेजर पार्ट ऑफ नेक्रोसिस इज बीइंग एक्चुअली हमारे पर इंथ्रस्टेड अपॉन अस, हमारे ऊपर ये डाला गया है. जब आप दवाई खाते हो तो नेक्रोसिस होता है आपके ऊपर. एवरी ड्रग इज अ पॉइजन. तो पॉइजन से नेक्रोसिस, अगर आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ले रहे हैं तो नेक्रोसिस कॉमन है, होगा ही, मरेंगे ही आपके साथ. तो इसको रिजेनरेशन जो फोर्स है, जो फैक्टर आपके शरीर का, उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा और इससे निकला जा सकता है. यू कैन कम आउट ऑफ दिस, but you will have to work upon the body. There is no other way. No medication can correct it. No food can correct it. Your exercise will rather destroy it. Destroy it more. ज्यादा नेक्रोसिस होगा क्योंकि आपके स्ट्रेंथ ही नहीं है ना. एक्सरसाइज करने वालों को हार्ट अटैक आ रहा है ना. All those exercising people, they are getting heart attack, sugar issue, kidney issue, सब आ रहा है. Because your organs are not strong. Once, if your organs are not strong, the more exercise you do, the more problem आ जाएगा. Even to do exercise, you have to create the right kind of situation in your body. So strengthen your organ and then you can do it. फिर आप कर सकते हैं. So I hope you are getting what I am saying. मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि I'm talking in a very simplistic, everybody can understand. Okay, Aarti ma'am, you can ask your question. Can you hear Aarti me? Roy, ma'am. Can you hear me? Yes, yes, Hello? yes. Go ahead. Go ahead. No, I'm asking, can you hear me? Yes, yes, yes. We Go can ahead. hear you. Now. Can you hear me? Yes, 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 yes. we Go can ahead. hear you, Aarti ma'am. Okay, like I have been suffering from knee pain. Like I couldn't fold my knees to sit down, or if I sit down on a chair, I can't get up. Sitting down is a problem, getting up is a problem, but now it is quite a lot reduced, but still a little bit is there. Now what is bothering me most is I have been a teacher for a long time. I suddenly all of a sudden, like my right ear, I can't hear too well. I can hear, but not too well, not clearly. I mean, conversation I can't hear. I can hear the street sounds, the sound of a car passing, the horn, everything. Traffic sound I can hear. But
Then I went to an ENT. ENT examined me and said that nothing wrong with the eardrums. Eardrums are okay. He did some tests. He held the tuning fork near my ear. Left ear is totally okay. Right, I mean, in front, at the back, and the right ear in the front, the tuning fork I could hear very clearly. But when he held it to the left, behind my ear, I couldn't hear properly. So the doctor said there's something wrong with the nerve. There's something wrong with the nerve. He wanted to give me steroid, but I will not take steroid. That is why I've come to you. I want to know whether Ashtaang Chikitsa will be able to correct or help this problem of mine, which I can't hear. I can hear with the left ear perfectly, with the right ear slightly. Slightly means little less. Yes, I will give you the answer. First of all, if you that is the what will steroids problem? Yes. What will steroids do? Do you know this? Do you know what will? I know the bad effects of steroid. I will not touch steroid. So I decided not to have medicine. If the nerves are weak, if the nerves are weak, what is the solution to strengthen the nerve? So I have come to you for a solution. You will help me. That is my faith in you. No faith required. So faith is a bad word. It's practically, if you see, I have been talking about nerves today a lot, right? I know. Neuro regeneration. When I'm saying neuro regeneration, this can be handled pretty well. From 6 o'clock, I have been following every word you said. This can be handled easily. This can be handled easily. We will give you a specialized method for this. Okay. So I will join and apart from, but see, specialized method are like pill. It impacts a particular area. Unless and until you improve other factors associated with it. Right. Anna, then it can't be called as a proper treatment. Proper treatment is working upon every area of your body, wherever it is required. Okay. Right. We will also give you specialized method to come out of this. You can easily come out of this. There are many people who have come out of problems of eardrum, especially when there is certain issues where they keep hearing some sound. That is also weakness of nerve. At least you are not hearing sound. It might have become weak. So sometimes it gets agitated. Okay. So those people come and say the problem has reduced considerably. Now I'm not hearing that many sound. Slowly come to a very stable state. My problem is I have got a problem when I speak. When somebody else is speaking, I can hear, but not so well, but I can hear. But when I speak myself, this is blasting, like it's like an echo. My voice is sounding very, very loud to me. It is sounding so loud, like it is bothering me. So that is again, it is weakness of nerve, because you are the most closest to that area. So the moment you speak, it resounds in that area. Right. So again, once again, come back, weakness of nerves. Yes, you can come out of this situation, at least come out drastically. It can reduce to such an extent where it won't be a problem at all. And you will also be able to take care of your life ahead, because sitting, getting up, in fact, if you check yourself, you'll see there are certain things which has become weak. Like, for example, your control over your exhalation has gone. Right. You are not able to control your exhalation. My left knee is giving me a problem. I mean, it is better, but still I cannot fold it fully. Getting into a car, getting out of the car, sitting on a sofa, sitting on the potty, getting up for potty. I can't fold my knee properly. It's painful. I'm correlating one problem with the other. If you take, I'm giving you a solution here only. If you control your exhalation, this problem will go away. Okay. Will you be able to do it on your own? No. So that is why we are training you. We will train you into that. And you'll see, you'll get a lot of relief in that. Not only in that problem,
that your knee problem is also associated with the weakness of nerves. So you'll have to fix This that, Monday and you'll see you'll also get relief in knee as well as in your hearing problem. And I'm going to join from Monday. So this will be a general class for everybody. I mean, Yes, this will be a general class for everybody. so the class For everybody, online. it will be general class. Initially, we'll teach you certain things, and then you'll have to deposit a form where we will do a little analysis and diagnosis of your system, and then we'll customize the things that you have learned according to your system. Okay, thank you very much. Aishi Mishra says, so sir, you are saying that my bone can regenerate with kumbhak? I mean the 1/4 of hip joint bone that has necrosed. Tell me, does your body do regeneration? What you do an experiment, है ना? अपना हाथ में ऐसे खरोच मार लो, take off the skin, a little skin, the upper epithelium, थोड़ा खरोच मार दो, है ना? Reddish हो जाएगा ना? Will your body recover? क्या आपका body recover करेगा? When your bone gets broken, does the body recover the bone? Who recovers it? आपका bone fracture हुआ, कौन जोड़ता है? दवाई है कोई bone जोड़ने का? कोई दवाई नहीं है. Maybe you are creating a wrong idea about medicine, but there is no medicine which can regenerate your bone. Only your body regenerates. आप एक काम करो, किसी का हड्डी टूट गया, उसको केवल एक जगह इकट्ठा करके बांध दो. In few weeks time, you'll see more strong bone in that area. Regeneration ज्यादा thick हो जाएगा. See in X-ray, तो regeneration नहीं हुआ. Your body does regeneration, and only your body does regeneration. Nobody else. तो आप regeneration factor को बढ़ाएंगे तो आपका bone regenerate नहीं होगा. Come on, this is simple logic. Okay, Sunil Kumar sir, you can unmute yourself and ask your question. Sunil Kumar Arun Chandra sir. Okay, Anurag sir has a question. Broca's aphasia can be treated in what duration? Once again, आज तो सारे क्वेश्चन उधर से ही है. न्यूरो रीजनरेशन, न्यूरो इलास्टिसिटी, Broca's is a part, ब्रेन में एक पार्ट है. अफेसिया मीन्स डैमेज हो गया. हाँ जी. No, I think it's somebody speaking in the background. Okay. So, जो फ्रंटल लोब है वहां पे एक एरिया हो गया. नामकरण रखने में ये अंग्रेज बहुत तेज होते, कुछ भी नाम रखते हैं, सॉल्यूशन नहीं देते. कहते कि टाइप बता देते हैं आपको. टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3, टाइप N, टाइप 10, फिर कहेंगे कुछ भी ठीक नहीं होता. ब्रोकास अफेसिया ठीक होता है क्या? नहीं जी, ठीक नहीं होता, मगर नाम हम दे रहे हैं ना आपको, नाम लेके घूमो डिजीज का. सो फ्रंटल ब्रेन में डैमेज हुआ, हाउ कैन यू रिकवर इट? क्या कोई तरीका रिकवर करने का? एलोपैथी में तो नहीं है, एलोपैथी में नहीं. क्या आयुर्वेद में तरीका रिकवर करता? वी हैव नॉट टेकन आयुर्वेद टू दैट एक्सटेंट, जहां पे कि हम खूब एक्सपेरिमेंट करें आयुर्वेद का, हमने किया ही नहीं. आयुर्वेद में है, लेकिन आयुर्वेद में भी अगर जो ट्रीटमेंट का मेथड है उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा. तो वो हमने किया नहीं. सो अभी क्या करें? लेकिन आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, एनीथिंग एक्सटर्नल आउट ऑफ योर बॉडी विल नॉट रीजनरेट थिंग्स. इट विल माइट हेल्प इन रीजनरेशन, मदद कर सकता है आपको, करेगा तो आपका शरीर ही. सो एनी काइंड ऑफ ब्रेन इश्यू can be handled through kumbhak, especially if the person is in control. जहां आपका कंट्रोल खत्म हो गया, you can't do kumbhak. But if you are eligible, if you have control at this point of time, certain uncontrol, क्योंकि ब्रेन में डैमेज हुआ, थोड़ा बहुत अनकंट्रोल तो होगा,
बट इफ यू कैन डू वॉट एवर इज बीइंग सेड, आपको जो सिखाया जा रहा है अगर आप कर सकते हैं, यू कैन इजिली कम आउट, आप इससे निकल सकते हैं. इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 2 3 साल लग जाए. सपोज करो 3 साल में आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, इज इट अ बैड डील? आपको पास तो और कोई तरीका नहीं है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज स्टार्ट योर जर्नी समवेयर. आपको दिल्ली से मुंबई जाना था, सोच के तो होगा नहीं. तो यू विल हैव टू वर्क अपॉन द स्टार्ट योर जर्नी. एक कदम रखेंगे, एक एक कदम रख के आप पहुंच जाएंगे. सो वॉट एवर टाइम इट टेक्स, इफ इट टेक्स 6 months टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इज इट बैड? 6 महीने काम कर लेने से क्या नुकसान हो जाएगा अपना? आपको और भी बहुत फायदा हो जाएगा. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड? क्यों ये ऐसा हुआ? देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड, दैट इज व्हाट वी डायग्नोस. वही तो डायग्नोसिस करते हैं कि अगर एक ब्रेन के एक पार्ट में डैमेज हुआ तो क्यों हो गया. तो कौन सा फैक्टर वीक है, कौन सा फैक्टर रुक गया, कौन सा बल नहीं लग रहा आपके शरीर में, कौन सा ऐसी चीज है जो काम नहीं कर रही. 84 फैक्टर्स होते हैं, 84 फैक्टर्स होते हैं, 84. कौन सा पार्ट वीक है? अगर कौन सा फैक्टर वीक है, फिर हम आपको कस्टमाइज चीजें देते हैं, आपके मेथड को चेंज करते हैं, आपको सपोर्टिव चीजें देते हैं. एंड स्लोली इफ यू वर्क अपॉन इट, आप इससे निकल जाएंगे. कहीं भी एम्बोलिज्म हुआ है आपको, एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? क्लॉट हो जाता है जिससे कि वो एरिया डैमेज हो जाता है. थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं. आपके पाँव में भी हो सकता है, आपके ब्रेन में भी हो सकता है, आपके हार्ट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. और आज के टाइम पे ये फैक्टर बहुत एग्रीवेट हो रहा है ह्यूमन बींग्स. किसी एरिया में एक क्लॉट, क्योंकि बॉडी रिस्क में आ गया. जब भी बॉडी रिस्क में आता है, बचाने के लिए वो क्लॉटिंग करता है, अपने खून को जमाने लग जाता है. तो रिस्क फैक्टर अगर आप अपनी बॉडी में बढ़ाएंगे, और एक रिस्क फैक्टर की वजह से ब्लड हो रही है, और फिर आपको डॉक्टर ब्लड डाइल्यूटर, मतलब उसको इन करने का ब्लड दे देता. क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही आप ऐसे कुछ मेडिकेशन डालते हैं, आपका बॉडी रिस्क में आके ब्लड को ठीक कर देता है, बचाने की कोशिश करता है. तो देयर आर मेनी रीजन टू एम्बोलिज्म और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और clotting or damage to a certain part of that organ can happen. आप इसको कम कीजिए अपने बॉडी में. That can happen only when you strengthen these factors. एक strong organ, strong function का ही रिस्क कम होता है, दूसरे का रिस्क कम नहीं होता. So if you make your body strong from within, organ strong, function strong, you will see regeneration factor will improve, and your body will be able to take off all the toxins and regenerate properly, and you'll see you'll come out of that problem. Rachna ma'am, you can ask your question. Please unmute yourself. In the meanwhile, Anita ma'am, you can ask your question since you are unmuted. Anita Mehta ma'am. Tinnitus I have talked about. BK Gupta ने पूछा है tinnitus प्रोस्टेट में. अगर देखिए प्रोस्टेट इनिशियल स्टेज में है तो वो ठीक हो जाएगा. अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तब तो आप उसको ऑपरेट करवा लीजिए. बट यू कैन एंश्योर थ्रू दिस प्रैक्टिस दैट यू डोंट गेट इनटू एनी अदर प्रॉब्लम. हाँ जी बोलिए. Anybody else? You all can unmute yourself and ask your questions in the meanwhile. Whoever's hands are raised, I have unmuted everybody. Anita Mehta ma'am. हाँ हेलो. हाँ जी बोलिए. हाँ मुझे क्या ये प्रोटीन लॉस हो रहा है. प्रोटीन लॉस यूरिन में प्रोटीन लॉस होता है. किडनी का इशू है. हाँ किडनी का था ना वो, उसमें किडनी का था. अगर डायलिसिस तो हो रहा? नहीं, डायलिसिस नहीं हो रहा तो जल्दी इसके लिए कुछ कीजिए, प्रोग्राम ज्वाइन करो. आपको अलग से भी हम कुछ सजेस्ट करेंगे, बताएंगे. आपकी किडनी को रिजुवनेट करने के लिए प्रैक्टिस देंगे आपको. अच्छा. हाँ. और क्रिएटिन खून में हाँ, है. हाँ, अगर वो क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर आपको डायलिसिस पे डाल देगा, फिर मुश्किल हो जाएगी. अभी आप डायलिसिस से बच सकते हैं.
ज्वाइन अभी आप करते हैं। हाँ हाँ, Okay. Hello. Whoever else wants to ask a question, please. Yeah, I am Dr. Rajesh Jayal. sir, Rachna Yeah. ma'am, yes, you can ask your question. एक हाँ वो उनको बोलने दीजिए डॉक्टर जोयल, हाँ बोलिए। Dr. Jayal from Dehradun. हाँ बोलिए। Yeah, I am asking about the lumbar spondylosis, and it is in fact it is a recurrence. It comes after some time. Yes, it will, because the thing which has caused lumbar spondylosis has not been corrected. So what you can do, take some stones which are hole in between, and try to keep 33 stones together. This is your spine. How will you keep 33 stones together? You need to put a rope, a right kind of a rope, and create proper tension. Isn't it? Yeah. The moment that tension is gone, whatever your problem of slip disc, spondylosis, those kind of things will happen. Yeah. So have you created the strength of that force which is creating that right kind of a tension in the spine? That is called as Dhyana. So we teach Kumbhak therapy. In Kumbhak therapy, the third we teach three things. The third part is called as Vyana Kriya Kumbhak. It is a structural integrator of the body. Vyana takes care of the structure of your body. That means it creates a structural integrity force which keeps your skeletal system, the external part of your body, the structure of your body proper. If it becomes weak, people get into these kind of issues. Now, immediate treatment, operation, or some kind of a pain relieving method can help you immediately, but it will not create the strength of Vyana. So the recurrence possibility is huge. Even if you correct it at one time, it will recur because the strength is not proper. You have not corrected or not increased the Vyana factor. So if you increase the Vyana factor and do also what you call as localized management, you'll see slowly and steadily, not only the problem will get solved, but the core issue will get solved. And then it will not recover. Then recurrence will not. तो वो उसको तो ठीक करना पड़ेगा. Yes, बोलिए. हाँ जी. Gautam Sehgal sir, you can ask your question. In the chat. सर मैं पूछूं? Yes, Rachna ma'am, you can continue. Ask your question. पार्किंसन के बारे में गौतम जी ने पूछा, अभी बता देते हैं. We'll tell you about Parkinson, गौतम जी. हाँ, आप पूछिए नंदिता जी. हाँ. 1 year back चीक में यहाँ पर कोई लंप आया था. I don't know. हल्की स्वेलिंग है. अभी भी है. और इधर में राइट साइड में थोड़ा सा एक स्पैजम टाइप का था. आई में ऑन एंड ऑफ होता रहता है. ये क्या? देखिए आपके हाँ आपको अगर मैं ऐसे बताऊं तो आपको समझ नहीं. आपका समान इश्यू है, समान फैक्टर वीक है. और दूसरे टर्म्स में बताता हूं कि आपका लिवर फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है. डाइजेशन लिवर फंक्शन की वजह से ये इन्फ्लेमेशन है. ये आंखों में भी इसका असर आता है. आंखों में भी आता है. पित्त विकार है, पित्त दोष है. आंख ऑपोजिट साइड में है. स्वेलिंग तो जो भी पार्ट वीक होगा वहां ज्यादा फील होगा. तो आपको पहली बात तो आपका लिवर को थोड़ा सपोर्ट चाहिए इस वक्त में. दूसरा क्या चाहिए, आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना चाहिए. और हीट इश्यूज तो यहाँ हाथ पांव में जलन तो नहीं होता है ना. हाथ पांव में जलन वो उसी वजह से है. इन्फ्लेमेशन है आपके बॉडी में. लिवर में इन्फ्लेमेशन है. लिवर में जलन हो रहा है. आपके लिवर को जलन हो रहा है. लिवर को तकलीफ आ रही है. और वो ठीक करेंगे. हाँ, वो ये ठीक हो जाएगा. बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा. बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा. आप प्रोग्राम ज्वाइन करो, ये ठीक हो जाएगा. हाँ. शुरू करना चाहिए. मुझे क्या करना चाहिए? वो सजेशन देखो, यहाँ पे हम सजेशन नहीं दे रहे.
डाइट वाइट का सारा सजेशन हम प्रोग्राम में ही देते हैं। अभी एक एक को अगर हम सजेशन का प्रोग्राम तो है नहीं कि, और सजेशन काम नहीं करता, समझ, मैं वही बता रहा हूँ कि छोटा छोटा उपाय तो बता देंगे आपको, मगर वो क्या ट्रीटमेंट नहीं है ना। तो आपको प्रोग्राम में डाइट का भी बताएंगे, बाकी चीजों का भी बताएंगे। पार्किंसन, हाँ, पार्किंसन, तो मुझे तो स्ट्रेस हो गया थोड़ा। स्ट्रेस से हटाओ, अपने ऊपर काम करो, स्ट्रेस से सब चला जाएगा, स्ट्रेस भी चला जाएगा आपका, है ना। ज्यादा डरा देते हैं बाहर, आप जितना गूगल करोगे, यूट्यूब पढ़ोगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो डरोगे, और क्या। नहीं, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। हाँ, आप अपने ऊपर काम करो, डरना बंद करो, और मेंटल कोई भी इशू, ये इशू ना माइंड में भी आता है, इशू इस वक्त में सभी को है। ये मेनली लिवर आपको लगता है आपके शरीर के साथ में प्रॉब्लम है, आपके माइंड के साथ में प्रॉब्लम नहीं है, माइंड के बराबर में ही होगा, ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, दिमाग में सोच आ रहा है, वो सब एकदम से चला जाएगा। आप देखो 3 महीने करोगे। पार्किंसन के बारे में मैं बता रहा हूँ। पार्किंसन अभी आज के टाइम पे पार्किंसन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, इसका इशू क्या है, पार्किंसन क्यों बढ़ रहा है? पहली बात यह कि जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, वो मटेरियल जो है वो कफ है। मटेरियल नर्वस सिस्टम जो है, मटेरियल कफ है, उसका सेंसेशन वात। हमारे शरीर में, क्योंकि आप देखिए हमने एनवायरनमेंट बदल दिया, हमारे लायक एनवायरनमेंट अभी है नहीं। हमने भोजन जो खा रहे हैं ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड खा रहे हैं। तो आपका शरीर कोई भी चीज जो आपके, और दवाई तो डाली जा रहे हैं, बचपन से दवाई डालते हैं, तो आपका शरीर कोई भी चीज को प्रॉपर कन्वर्ट नहीं करता। अगर आपके चावल में कीड़े आ जाते हैं तो कीड़े खाओगे क्या आप? नहीं खाओगे ना। तो बॉडी भी जानता है कि उसका फूड क्या है। आप मॉडिफाइड दोगे तो वो प्रॉपर तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कन्वर्ट नहीं करता। क्या हो रहा है कि जो हमारा कफ मटेरियल है उसको कन्वर्ट होना चाहिए, और कन्वर्ट होके न्यूट्रिशन बन के बॉडी को रिजुवनेट करना चाहिए, बॉडी के नए सेल्स बनाने चाहिए। वो फैक्टर वीक हो गया। स्पेशली नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, इसीलिए क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, रिजुवनेशन कर ही नहीं रहा। तो पहली बात मैंने आपको बता दिया था, कंट्रोल हो गया ना। सिंपल टर्म, आपको कंट्रोल करने के लिए आप करते क्या? तो आप ब्रेथ को होल्ड करके कोई भी चीज कंट्रोल करते हो, वेरिएबल ब्रेथ होल्ड, एंड दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर बॉडी। एक चीज जो बहुत ज्यादा वीक है, ब्रेथ होल्ड का फैक्टर बहुत वीक हो, ठीक है, ये फैक्टर बहुत वीक हो। अगर ये ब्रेथ होल्ड का फैक्टर वीक हो गया तो आपका कंट्रोल खत्म ही होता जाएगा। तो एक चीज ये कि कुंभक तो पार्किंसन वालों के लिए अमृत है, और कंपलसरी कर देना चाहिए। लेकिन क्या है कि लोगों का दिमाग अभी किसी और थेरेपी ने घुमा के रखा हुआ है। सरकारें जो है ना दे हैव समहाउ ओपन देयर आईज, आंखें तो खोला मगर ऑप्शन नहीं मिल रहा ना। अभी बहुत काम करना पड़ जाएगा। एलोपैथी को के अलावा भी अब चीजें प्रमोट करने लग गई गवर्नमेंट। आयुष मंत्रालय बना दिया, वो कुछ और चीजें भी प्रमोट कर रहे हैं, मगर अभी भी वो अंडरस्टैंडिंग आने, वो समझ आने में अभी टाइम लगेगा। तो अगर पार्किंसन वाले लोग कुंभक करना शुरू कर दें तो पहली चीज वो क्या देखेंगे, दे विल हैव बेटर कंट्रोल ओवर देयर लिम्स। तो जो चीज आपके लिम्स पे कंट्रोल ला रही है उसको तो कंपलसरी करना चाहिए ना। पार्किंसन की ट्रीटमेंट में उसको कंपलसरी कर देना चाहिए। आगे चल के 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा। आज हम काम कर रहे हैं, ये काम जब बढ़ता जाएगा तब जाके आंखें खुलेगी गवर्नमेंट की, बाकी लोगों की, तो वो करेंगे नहीं इसको करो कंपलसरी। अभी तो नहीं कर रहे, अभी तो हम बोल रहे हैं कि कंपलसरी होना चाहिए। पहली बात तो कंपलसरी होना चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो रीजनरेट योर नर्वस सिस्टम थ्रू कुंभक। ये बात हम बोल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे केस हैं जहां पे कि न्यूरो डिसऑर्डर के, जहां पे कि उनको बहुत रिलीफ मिला, बहुत रिलीफ मिला।
सो पार्किंसन जब तक जिए ना, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बंदे को होना चाहिए। ये एग्रेवेट अगर हो जाएगा तो आप देखो डिपेंडेंट हो जाओ, दवाई खाएंगे इसके लिए और एग्रेवेट होगा, बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। एक बात मैं बता देता हूं, आप जितना दवाई ले लो ये और बढ़ जाए। तो ये तो आपके लिए कंपलसरी है, आप इसको करो। जो પાર્કિન્સન છે ને એ વધતું જાય કે છે, આજે તમારો હાથ હલે છે ને, હા એ આ કુંભક કરે ને તો કે છે ઓછું થઈ જાય। देखिए आप अपना नंबर छोड़ કુંભક કરે ને दीजिए તો आप ઓછું अपना થઈ જાય, આ પછી આમાં આમાં વધતું જાય। और कोई सवाल है तो मेरे को સવારથી કઈ વાંધો નથી, મગજનું એ છે, आईपीएस મગજમાં इरिटेबल बाउल ठीक हो सकता है। કઈ कसरत करावे। बहुत आसानी से ठीक हो सकता है, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। फैटी लिवर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लिवर बचा रहा है, आपको रोंच लग जाता है, जलन होती है तो मेरी बेटी और 10 इयर्स की है, उसको है, उसका साइज 16 है 10 इयर्स की एज में। फैटी लिवर उसने ना बचपन से बहुत एंटीबायोटिक्स खाए थे 5 से 7 तक ब्रोंकाइटिस वगैरह की वजह से, तो उसमें 5 साल में ही उसका लिवर बढ़ गया था, तो और अभी 10 इयर्स की एज में उसका 16 साइज है। आप देखिए अगर उसको आप छोड़ भी देना 14-15 साल तक एज में बच्चे का बॉडी जो है वो ग्रो करता है और वो अपने आप को ठीक कर सकता है, लेकिन उसका वेट बढ़ता जा रहा है, 60 वेट हो गया इस एज में भी ना, और जबकि बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, घर पे भी डाइट कंट्रोल है, लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा है। मैं फिर आपको बताता हूँ कि इनिशियली इस समय तो वेट गेन होगा क्योंकि रिस्क है बॉडी के अंदर, तो बॉडी वेट करके रिस्क को कम करता है, लेकिन ये वेट धीरे धीरे करके निकलेगा, मगर 1 साल 2 साल में नहीं निकलेगा। When she will be around 16 years of age, 16 साल की एज तक आते आते आप देखेंगे तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस के वजह से उसका वेट जो होगा, लेकिन अगर दवाई देके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर बिगड़ जाएगा किसी उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो गया, प्री डायबिटिक भी हो गई है। वो तो दवाई की वजह से हो रहा है, उसमें क्या तो करें, पर कोर्स हम करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। हम 16 साल से कम बच्चों को नहीं लेते, बच्चों के लिए अलग कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। आप अपना नंबर छोड़ जाइए, जब वो शुरू करेंगे तो आपको हम बोलेंगे इसको ज्वाइन करवाना। आप अभी नहीं करते। मुझे भी जैसे लिवर में 2 सिस्ट है, हेमांजियोमा है, एक बड़ा साइज है, एक छोटा है, तो वो क्योर हो सकता है क्या? क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक एसिडिटी स्ट्रेस बहुत रहता है। हाँ वो गैस्ट्रिक, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है आपको? हाइपर एसिडिटी है, मिर्च में खा ही नहीं सकती, गैस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, 8-10 साल से आईबीएस, ठीक है, अच्छा ये भी बता देता हूँ, उसके साथ में आईबीएस भी बता देना, जो कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और ये जो इश्यूज हैं इसमें 2-3 बातें आपको समझने की जरूरत है कि अगर एसिडिटी होती है, आप एक कोई रेंटैक खा लेते हैं या इस तरह की चीज खा लेते हैं, तो वो आपके एसिडिटी क्रिएटिंग फैक्टर्स को असर नहीं देता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का एक्चुअली में कोई इलाज नहीं है, वो क्या करते हैं इंटेस्टाइन का एक पार्ट काट देते हैं, उसको लगा देते हैं, फिर वो कहीं और होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगेन न्यूरो नर्वस सिस्टम में वीकनेस के कारण होता है। एसिडिटी फैक्टर्स ज्यादा है, इसका मतलब और भी चीजें हो सकती है, जैसे गट में माइक्रोबायोम यानी बैक्टीरिया खत्म हो गए, दवाई खाई आपने, बैक्टीरिया मर गए, आप पचा नहीं पा रहे, आपका डाइजेस्टिव, इसे कहते हैं गार्ह्य पत्य अग्नि कमजोर हो गया। लिवर इंपैक्टेड होता है दवाई खाने की वजह से, उसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, मगर कोई इस पे काम नहीं कर। सो अगर आपको ठीक करना है, यू कम टू दिस प्रोग्राम, आईबीएस और ये गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये चीज आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर सिस्ट क्योर हो सकता है क्या, लिवर का सिस्ट? जब लिवर के सिस्ट के बारे में बात करते हैं, लिवर को अगर हम सपोर्ट देना शुरू करेंगे तो सिस्ट ठीक हो जाएगा। देखो सिस्ट प्रॉब्लम नहीं होता, सिस्ट अगर कार्सिनोमा बन जाए, सिस्ट अगर बढ़ता जाए तब प्रॉब्लम होता, बॉडी में सिस्ट होता ही है,
लेकिन सिस्ट को बढ़ना नहीं चाहिए। तो वो कब होगा? अगर आप रिस्क कम कर दोगे तो नहीं बढ़ेगा। रिस्क अगर बॉडी का, लिवर का रिस्क है ही, वो लिवर में प्रॉब्लम है ही, तब वो एक ऐसा भी टाइम आ सकता है जब वो बढ़े। अगर वो नहीं बढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बढ़ना शुरू किया तब प्रॉब्लम होती है। सो यू कैन हेल्प इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हेल्प कर सकते हो, सिस्ट से डरिए नहीं। सिस्ट तो हर एक के बॉडी में होता है, अलग अलग जगह पे। वो तो आजकल स्कैन करके देख रहे हैं तो पता लग रहा है, मगर प्रॉब्लम सिस्ट नहीं होता। सिस्ट आराम से हैंडल हो जाता है। अगर वो नहीं भी खत्म हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तभी है जब वो कुछ ब्लॉक कर रहा है या फिर वो बड़ा हो रहा है। वो लिवर के चारों लोब्स में है, दो, और कोई डॉक्टर कहता है कुछ नहीं होता, कोई कहता है कैंसर भी हो सकता है आगे चल के इसका। मैं वही बता रहा हूं आपको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम अननेसेसरी दवाइयां खा खा के अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, ऐसे में लिवर का रिस्क बढ़ता है। लिवर को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये सिस्ट कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। कई छोटे सिस्ट चले जाते हैं, कुछ अगर रह भी गए तो इशू नहीं करेगा, अगर लिवर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ये जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, हो सकती है, मगर उसे डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी काम कीजिए इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। मेरे को सर एक क्वेश्चन है। अभी देखिए, हम सारे क्वेश्चन अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया हमारा। हाँ सर, दूसरे काफी मतलब टाइम से वेबिनार में हैंड रेज मुझे किया था। शिफ्ट कर। हाँ, काफी टाइम से हैंड रेज किया था एक राजेंद्र कुलकर्णी। हाँ, बोल दीजिए अपना प्रॉब्लम, बोल दीजिए। मैं जब हाँ, मेरा ऐसा बढ़ जाता है तो ब्रेथ स्टॉप किया तो फाइब्रॉइड नहीं, मेरा बीपी बढ़ जाता है जो ब्रीथिंग स्टॉप किया तो। नहीं, वो देखो, कुंभक हम ऐसा नहीं करवा रहे आपको। बीपी इनिशियली आपका थोड़ा बीपी बढ़ सकता है कुंभक करने पे, वो बढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप काम भी करते हैं तो भी बीपी बढ़ेगा ना। अरे भाई, काम भी आप थोड़ा ज्यादा चल लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, इसका मतलब चलो मत। शरीर को इस्तेमाल करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, मत करो इस्तेमाल। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपका शरीर का स्ट्रेंथ वीक हो, हार्ट का स्ट्रेंथ वीक हो गया, इसे कहते हैं दक्षिणाग्नि वीक हो गया, उस पर काम करके ही ठीक होगा। वो बीपी ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद। हम बीपी का प्रोग्राम भी करते हैं, बीपी और हार्ट डिजीज का। हाँ जी कुलकर्णी जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ जी, इशू मेरे वाइफ का है। इट स्टार्टेड विद द लेग पेन, तो हम उसी टाइम पे ब्लड टेस्ट कुछ कराए थे, तभी डायबिटीज डिटेक्ट हो गया था। डायबिटीज के ऊपर काफी सारा कंट्रोल आ गया, 1-2 महीने के अंदर ही आ गया। और मतलब शुगर लेवल एकदम 367 वगैरह था, उससे डायरेक्ट 119 पे वगैरह आ गया 2 महीने में। उसके बाद कंट्रोल में ही है, लेकिन पेन कम नहीं हो रहा था। तो किसी ने सजेस्ट किया न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, एमआरआई वगैरह कराने को बोला था, वो भी किया। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि उनकी तरफ से कोई भी सॉल्यूशन एज अ मेडिकल डायग्नोसिस करके कुछ नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पेन मैनेजमेंट का आप ट्राई कर सकते हो। पेन कैसा है कि लेफ्ट लेग में थाई से लेकर अदर कमर के इधर चालू होता है, हिप लेवल पे, और साइटिका की तरह वो नीचे पूरा जाता है, और पूरा दोनों पैरों में नीचे पैर की उंगलियां सूंघ हो जाती है एकदम। उसको टच भी करे तो एकदम ऐसा शॉक जैसा फील होता है। उनके को न्यूरो कंडक्शन टेस्ट वगैरह भी सब किए थे। अब मेडिकली कुछ डायग्नोस वो नहीं कर पा रहे, सिर्फ बोल रहे कि पेन मैनेजमेंट से ट्राई कर सकते हो तो मैं करो। आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम, विश्वास नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम। पहली बात तो आप डायबिटीज कंट्रोल, अगर शुगर लेवल कंट्रोल कर रहे हैं दवाई से, ये कोई दवाई अच्छा से नहीं, दवाई से नहीं सर, दवाई से नहीं कर रहे हैं। दवाई के अलावा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। हाँ, क्रिया योग करती है, और क्रिया योग और उनका खाने पीने का पूरा कंट्रोल में है। इसके लिए वो अभी बढ़ा ही नहीं वापस उसके बाद। हाँ, वो ठीक है। दूसरी बात, जो अभी ना स्पाइन में वीकनेस है, लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन थोड़ा वीक है, और वहां पे क्या होता है कि ये नर्व थोड़ा दबरा है। हाँ, उनके स्ciatica में इशू है, नर्व कंडक्शन में इशू नहीं है। हाँ,
नर्व कंडक्शन में इशू नहीं है, नर्व हेल्दी है, वो सियाटिका का टेंशन प्रॉपर नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी पे कहीं ना कहीं पे उस पर दबाव आ रहा है। इसीलिए दोनों पैरों में लग रहा है, लेफ्ट पैर ज्यादा है लेकिन राइट में भी अगर पेन मतलब इतना कि वो पूरा अलाइनमेंट का रोती है। हाँ, ये अलाइनमेंट का इशू है, ये स्पाइन के अलाइनमेंट का इशू। हाँ, क्योंकि स्पाइन का अलाइनमेंट एमआरआई में तो रिपोर्ट में ठीक आया था सर। एमआरआई में स्पाइन का अलाइनमेंट नहीं पता चलेगा ना। अच्छा, स्पाइन का अलाइनमेंट आप केवल अगर स्पाइन की हड्डियों को देख के अगर स्पाइन का अलाइनमेंट नहीं बोला, बॉडी का लेफ्ट एंड राइट होता, आपका सियाटिका भी नीचे आके दो पार्ट में बाइफरकेट होता। करेक्ट, दो पार्ट में बाइफरकेट होता है, तो सियाटिका तो दिख जाएगा आपको, लेकिन अलाइनमेंट है कि नहीं है ये कैसे दिखेगा? ये नहीं दिखेगा, एमआरआई थोड़ी अलाइनमेंट दिखाता। हड्डियों का अलाइनमेंट केवल आपको डॉक्टर बोलेंगे नहीं ये तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि उसमें इश्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि हड्डी घिस गई है। करेक्ट। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का बैलेंस होता है, हाँ जी, वो बैलेंस नहीं है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि नले ठीक नहीं है। जो जांग का इंटरनल पार्ट होता है ना, वो ये अलाइनमेंट करता है पांव का। तीन अलाइनमेंट चाहिए आपके बॉडी में, नाभि, कौड़ी, नले। कौड़ी और नले, हाँ। नाभि का अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। दूसरा, कौड़ी यानी चेस्ट का अलाइनमेंट होता है, इससे लोगों को श्वास, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, इस तरीके की चीजें आती हैं। और तीसरा अलाइनमेंट है नले, इंटरनल पार्ट ऑफ थाइस, विच इज एक्चुअली बेसिकली आपके बॉडी स्पाइन को वो अलाइन करता है। करेक्ट, वो मतलब उंगलियां भी नम हो जाती है, पूरे उंगलियां भी नम हो जाती है, पैर पूरा फुट लेवल पे नम हो जाता है। नर्व की वजह से होगा, नर्व की वजह से होगा। तो नले के लिए हम एक प्रोसेस देते हैं अंगन्यासन। ओके, तो ये प्रोसेस में हो जाएगा आपके प्रोसेस में उनका ये अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के लिए हठ विन्यास हम देते हैं। अगर ये दो चीज करेंगे उनका अलाइनमेंट हो जाएगा। हाँ, मतलब आपका जो अभी करेंगे कोर्स उसमें वो पूरा हो जाएगा। हाँ, उसमें वो है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, बट सॉल्यूशन है इसमें, मतलब वो सॉल्यूशन है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो विल स्टॉप दिस नाउ, विल हैव टू स्टॉप दिस। आपके पास में कोई और सवाल है, आप नंबर छोड़ दीजिए, आपको कोई ना कोई कॉल करेगा, आपके सवालों का जवाब देगा। बट एक चीज बहुत जरूरी है इस वक्त में, हमने ह्यूमन बॉडी, अपने ही मानव शरीर को इस हाल में लेके आ गए हैं कि ये मुश्किल में आ गए। तो आपका बॉडी लाखों सालों से हेल्थ था, पिछले 50 साल में क्यों कम? क्योंकि हम इसको नजरिए से नहीं। तो आपको ये सबसे ये जिम्मेदारी जरूर लेनी है सभी को कि जब तक जिए तब तक हेल्दी जिए, प्रॉब्लम में ना जिए। और दूसरा, आपका शरीर आपके लिए सबसे बड़ी जायदाद है, ये डिमांड कर रहा है कि मुझे संभाल लीजिए, और आज हमें जरूरत है कि इसको संभाल। प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, कुछ इसके बारे में कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार में आने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, Swamiji. Thank you so much. People who have not been able to ask their questions, please write in the webinar group, and we will take it up with Swamiji, and your questions will be answered thereafter. Thank you so much, and good night. Namaste. Swasth rahe.